हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं स्टार्ट करी हूँ सीटेट पेपर 1 फरवरी 2016 के पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बुक है आर गुप्ता। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टीफन क्रेसेंस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए द इनपुट hypothesis. Option number B, the acquisition learning hypothesis. Option number C, the learnability hypothesis. Option number D, the nature order hypothesis. तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का ए, द इनपुट हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 122 आ जाता है, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू ऑप्शन नंबर ए बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड, ऑप्शन नंबर डी फाइंड आउट हाउ टू स्टे अ वर्ड। 122 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 122 का आंसर हो जाएगा ए, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। 123 क्वेश्चन नंबर 123 कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन ऑप्शन नंबर ए engaging learners in exploring new language, the role of imitation, C option memorizing grammar rules, D the dominant role of the teacher in the classroom। 123 का आंसर हो जाएगा ए, एक मिनट, ए हो जाएगा engaging learners in exploring new language। 124 question number, the major objective of teaching English at primary level is option number A speaking English in British accent, option number B scoring good marks in the exams, option number C knowing the grammar of English, option number D using English in different situation of life। तो 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। 125 क्वेश्चन नंबर, इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑप्शन नंबर ए टीचर्स फील रिलैक्स्ड while students are talking, they are option number B they enjoy spending time talking with their friends, option number C they can learn the correct pronunciation from each other, option number D they use the target language for various purpose। 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, they can learn correct pronunciation from each other। 126 question number, a teacher of class 5 is planning to teach grammar. Which one of the following might be a good strategy for teaching grammar? Option number A asking students to carefully note down the rules from the blackboard, option number B giving clear explanation of the rules with examples, option number C asking students to do drill work only to learn rules, option number D giving the practice of grammar in context as a strategy। 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल विथ एग्जाम्पल। 127 question number, which one of the following is not true in relation to the use of children literature? Option number A their reading proficiency
deteriorates and gets worse. B option, it helps in developing learners' imagination. It broadens their mental horizon. Option number D, it makes them understand and respect diverse culture. 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट broadens their mental horizons. 128 question number, while assessing a group work, a teacher should not focus on. Option number A, cooperative learning process. Option number B, assessing each child's work. Option number C, taking initiatives in work. Option number D, showing concern for others. 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, assessing each child's work. 129 question number, a diagnostic test in English will help the language teacher to identify. Option number A, slow learners in her class. Option number B, learning difficulties the learners faces in English. Option number C, the topic which the learners has not learned by heart. Option number D, intelligent learners in her classroom. तो 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग डिफिकल्टीज इन द लर्नर्स फेसेस इन इंग्लिश. 130 क्वेश्चन नंबर, while teaching English, a teacher is not able to draw attention of some students sitting at the back. She should. Option number A, stop explaining the concept and start dictating the notes to students. Option number B, scold them for not paying attention. Option number C, ignore them and carry on. Option number D, engage them by asking question and evaluating her teaching method. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 130 का, engage them by asking questions and evaluating her teaching methods. 131 question number, when a child learns a language naturally without much practice, it is called. Option number A, language adaptation. Option number C, language learning. Option number C, language acquisition. ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज जनरलाइजेशन. 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज एक्विजिशन. 132 क्वेश्चन नंबर, द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन. ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स. ऑप्शन नंबर बी, लिंग्विस्टिक competence plus an ability to use the language appropriately. Option number C, the practice of selected and graded structure patterns. Option number D, the structural accuracy of the sentence. 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स. 133 question number, which one of the following is most important in developing reading skill at primary level? Option number A, ability to comprehend the text already read. Option number B, only knowing the correct order of alphabet. Option number C, ability to read words correctly. Option number D, ability to read phrases correctly. 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ability to comprehend the text already read. 134 question number, while reading, a learner needs to. Option number A, translate the written symbols into corresponding sounds to grasp their meaning. Option number B, perceive and decode letters.
in order to read words. Option number C, understand every word to grasp the meaning of the text. Option number D, guess the contextual meaning of new words to understand the text. 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. Option number B, perceive and decodes letters in order to words. And last question, 135, diphthongs are option number A, double consonant sounds, option number B, vowel sounds, option number D, double vowel sounds, option number D, consonant sound. 135 का आंसर हो जाएगा डबल वॉवेल साउंड्स. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो. टेक केयर.